Okay, wonderful. So we're live here, and we should be starting our conversation in next few minutes. Um, as soon as you join, I would request that if you can confirm if the video quality and the sound quality is good at your end. Wonderful. Great. So we have already 8 people in, and as we move forward, wonderful. Thank you, Ali, for confirming the sound. I hope that in next 1 or 2 minutes we'll be able to start, because there are a few important announcements that I'd like to make in the beginning of the session that would help us, inshallah, as we move forward. So my apologies to those who have joined, because you people are incredible. You respect time like anything. But I'll just take a minute or so before we begin, because we're expecting around 30-40 odd people to be part of the program, because there are some important observations that I'd like to make in the beginning of the event. And we'll have question answers as well in the program as we now move forward. Good. I think now, respecting the time of people who have joined us, we begin our session today. So Assalamu alaikum everyone, and welcome to this 1 hour conversation that we're going to have about what about learning? What about learning? What are we doing? Hey Monica, hi, how are you? Hi Sohail. This program, the conversation that we're going to have today, and I'm repeating, the word is conversation. It's not one directional. I will talk about few very important observations for which most of you ideally are here for. But the idea is that we in this conversation try to build some future directions, which is very important. Let's begin. So first of all, thank you all for joining. Today particularly is a very special day for me. Very special day for me, and I'll tell you why. This morning we did the first ever virtual trainer program. So it's called Creative Virtual Trainer Program. This morning we did the first ever Creative Virtual Trainer Program as a public program. So we had people from different companies being part of it, and I think I'm so excited. I'm so overwhelmed by it. Because finally this is happening. For last so many years I've been trying to propose. चीजें नहीं हो रही थी, तो शायद हम कोरोना का इंतजार कर रहे थे कि ये हो जाए. But I think this is exciting. It's exciting. And just to look at the response, हम लोगों को today we had around 30 people in our group of the Creative Virtual Trainer Program. It's a 3-day program. Every morning 1.5 hours we do it. So this batch ends on the 22nd of April. But here's the news. We are launching another program, Creative Virtual Trainer Program Batch 2, from 4th to 6th May. Isn't it exciting? Because उस दौरान रमजान होगा, और रमजान में कोई सोच नहीं सकता था कि ट्रेनिंग्स होंगी, but अब हो सकती है, because it is going to be virtually, and I'm very excited about this prospect as well. So from 4th to 6th of May, we're going to do this program. Hello Rashid, good to have you here. Hello Asim. I'll not be able to now acknowledge everyone who joined us in, but I'll make sure that जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, we are able to achieve that. So इस session के अंदर, that is the future, how am I looking at this, and what we can do about it, how the present scenario looks like, how the future would look like. We're going to talk about it. Of course, it is going to be my perspective, because I'm the one who's speaking. However, this is my commitment to my profession. Everything that I'll say, I'll share my most sincere perspective. It might hurt me. It might hurt me as professional, as businessman. It might hurt me, but I'm willing to do that, because I think this is a time we all be slightly authentic about the kind of work that we are trying to do. The other observations that I'm going to share is from people I've been in touch with. I had an amazing opportunity to interview the guru of guru, Dave Ulrich, few days back. And I don't know आप लोगों में से कितने लोगों को ये opportunity मिली, that you were able to see that conversation of myself with Dave Ulrich. जो लोग इसको miss कर गए हैं,
here it is, it's on your YouTube, जिसको I hope आप लोगों ने subscribe कर लिया होगा अभी. इसके अंदर in conversation series के अंदर you can always watch that episode with Dave Ulrich. So in last few weeks I have been talking to a lot of international friends, mentors, seniors, and I've been trying to understand where are we headed, क्या हो रहा है दुनिया में. मैंने कोशिश की है पिछले 2 हफ्तों के अंदर टू हैव कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम पीपल आई एम इन टच विद इन इंडिया, बिकॉज इंडिया के साथ हमारा कॉन्टेक्चुअल रियलिटी बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों का एटीट्यूड और वो, सो there is so much of contextual reality with them as well. So I will share with you those observations. Now my last request before I get to my, I've taken the notes down. So before I get to my pointers, may I request all of you who are part of this program right now to take a notepad with you. Of course the session will be later available, लेकिन दोबारा आके किसने सुनना है? आप लोग live आए हैं, this is a great opportunity. So my request would be, please take out a piece of paper and make sure you're doing the note taking along, so that you all can benefit from it. And then I'll take another, say, 20 minutes or so. I'll take 20 minutes and I'll complete my talk and I'll take questions from you. So that is something which is the real value of the training. That is, we can have conversation, your questions asked, and I'll try to respond it again to the most sincere perspective that I have about that question. So let's begin now. First observation, there are 5 observations that I'm about to make today. First observation is that in industries that can be called as critical industries. Now, what is critical industry? Industries whose business or whose purpose of existence has not been undermined. Here's the thought: business or the purpose of existence has not been undermined. So for example, healthcare is a critical industry right now. For example, if you're running a departmental store, that's a critical industry right now. If you are managing online solutions for your clients, it's a critical industry right now. So there are some critical industries right now which are not hurted by the consequential impact that has happened out of COVID. In fact, their work has doubled or tripled. इन क्रिटिकल इंडस्ट्रीज, तो अभी यहाँ पे जो लोग हैं, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं किन कंपनी से वो हैं, लेकिन आप अपने आप को असेस करें कि क्या आपकी इंडस्ट्री क्रिटिकल है. दैट इज, क्या आपका या तो बिजनेस बढ़ गया है. फॉर एग्जांपल जूम का बिजनेस 5000% बढ़ गया होगा. दिस इज इनक्रेडिबल, राइट? सो जूम would love this COVID. I mean, of course, Allah maaf kare, they would not love the COVID, but they would love the situation. So the idea over here is, first try to assess, is your industry a critical industry or you are non-critical industry? And iske upar ab main 2 approaches share karunga. In critical industry, trainings for next few months will be categorized under essentials and non-essentials. देखिए, मैं यहाँ पर कोई फिलोसॉफिकल लैंग्वेज डिस्कशन करने के लिए नहीं आया हूँ आपके साथ. मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहीं बात कर रहा था एसेंशियल ट्रेनिंग का, तो वो एक हमारे सामने फिलोसोफर बैठे, देखें सुहेल, सारी ट्रेनिंग एसेंशियल होती है. मैंने कहा, आप एक काम क्यों नहीं करते, इंडस हॉस्पिटल जाकर उनको बताएं कि मुझे एक ट्रेनिंग करवानी है ऑन, चले लीडरशिप स्किल्स, जाके सेल करें इंडस हॉस्पिटल को. आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से बात करें और उनको बताएं हमें टीम बिल्डिंग की एक ट्रेनिंग करानी है. एंड आई वुड लाइक टू सी द रिस्पॉन्स. You got my point, right? There are things which we need to understand. We need to empathize with the businesses we are dealing with, and you people represent those business. Who knows more than you? Yeah. So the first thing is, there will be a massive dip in non-essential. अब non-essential क्या है? Non-essential हर वो ट्रेनिंग है जिसका ताल्लुक कोरोना, that is COVID-19 से नहीं है. हर वो चीज जिसका ताल्लुक COVID-19 से नहीं है. Internationally, I've been talking to people at CCL, DDI. What gets bigger than them? They've been telling this is one diction that is being used. Is the training essential or non-essential? Non-essential, keep them on hold. We are not saying it's not important. We're not saying it's not important. But most important is that what keeps the business running without any consequence. So trainings related to, hygiene around COVID, how to deal yourself in that domain will not die, but non-essential will go on a pause, which you are already observing.
The second observation, which is again very generic, I'm sure आप में से भी ज्यादातर लोग एग्री करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास करियर प्लानिंग नाम की कोई चीज थी, कॉन्सेप्चुअली नहीं, प्रैक्टिकली, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन हु हैड प्रैक्टिकल understanding of what career planning is, there will be a massive opportunity for career related training enhance. So अभी बहुत सारी organizations के अंदर they are looking at career enhancing opportunities. I'm sure आप भी अगर LinkedIn और Facebook और यहाँ पे दुनिया को देख रहे होते हैं तो आपको पता है कि इस वक्त हर शख्स कोर्सेरा का या किसी यूनिवर्सिटी का या यूडेमी का या edX का या किसी भी और प्लेटफॉर्म का, they love putting up their certificates. They are doing so many certifications. अल्लाह खैर करे कि जब ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो फिर हम अपने सर्टिफिकेट्स कहाँ लेकर जाने वाले. आई होप ये सर्टिफिकेट्स हम सिर्फ आउट ऑफ डेस्परेशन नहीं कर रहे. The idea is that it should actually serve a career development drive. So those industries who are not into a critical situation, that is, are having financial dip, economic dip, they would certainly, if they are progressive, if they are future looking, they would be definitely looking at opportunities around the domain or around the scope of career development spaces. So future job responsibilities के लिए लोगों को आज educate करना और develop करना. So that's the second thing. Now here's another important area, and I would really appreciate if you can take notes down. I am now about to talk about some new domains under which trainings have enhanced. So that is, ये वो 4 areas हैं जिसकी on ground trainings increase हो गई हैं. And those who are here, I can see few are from the company side, but then there are few who are also trainers offering their services. I think this can be a great help to all of us. सबसे पहले एब्सोल्युटली आसिम, मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर्स लेने वाला हूं. आसिम का अभी मुझे सवाल मिला है, बट मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर्स लूंगा एंड वी गोना टॉक अबाउट इट. सो और but listen to these next 2 points. This may have answer to a lot of your questions. The new domains जिसके अंदर अब ट्रेनिंग डेवलप करने की बात हो रही है, वन, और बात नहीं हो रही है, काम हो रहा है इसके ऊपर. पहला, पॉलिसी रिलेटेड और कंप्लाइंस रिलेटेड. और इंटरेस्टिंगली पॉलिसी और कंप्लाइंस रिलेटेड के ऊपर जो मेजर शिफ्ट है वो एनिमेटेड वीडियोस का, ई लर्निंग मॉड्यूल्स का ज्यादा है एज कंपेयर टू एंगेजिंग एन इंडिविजुअल. क्यों? क्योंकि एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि ये कंप्लाइंस रिलेटेड और ये सारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं नॉर्मली वैसे ही क्लासरूम में इतनी बोरिंग हो जाती थी, तो ऑनलाइन तो यू नो राइट. सो देयर इज अ थॉट अराउंड इट दैट हाउ वी कैन convert these training into more animated e-learning based solutions. So I think that's one of the major increase in trend. So यहाँ पे company के जो decision makers हैं, they can actually benefit from it. And there are so many providers, they're doing good things. Learning Minds भी करता है, but this is not Learning Minds session. So मैं अभी कोई भी बात Learning Minds की promotion के लिए नहीं करूँगा. सब करते हैं. आपने क्या करना है? You have to make sure you're working with people who understand organizational dynamics, they have better technology, and they are ethical on their service standards. That's it. You don't need anything else. So that's something which is important. The other domain, I think ये एक ऐसा domain है जिसके ऊपर पाकिस्तान में unfortunately अभी बहुत ज़्यादा rigorously काम नहीं हो रहा है, but I see a lot of future scope in this work. And what is that work? The work is around empowering people on the use of technology. I still see a lot of people not being very comfortable with Teams and Zoom and WebEx and other online networking platforms. Plus, they are finding it very difficult to manage other internal. For example, I was in conversation with a wonderful company, New Horizon, who are partners of VMware in Pakistan, and they provide work from home solutions. Incredible solution. And those who are interested in it, please, you can write to me separately. I'll share with you my email ID as I complete. But the idea behind work from home solutions and this entire idea is that people will gradually move towards looking at work from home as rather here to stay solution rather than कि ये अभी चंद दिनों की बातें नहीं. Internationally, the dialogue suggests that people are now finally looking at work from home as a solution to stay rather than ठीक है try करते हैं फिर देखेंगे.
It's not going to happen. So I think that's another very important thing to be taken note of. So tech based trainings का scope बहुत massive है, and I think this is an opportunity for all of you to look at people in your organization who are tech savvy and how we can benefit from their expertise to give them this opportunity to mentor your organization in the process. So I think this is going to be very important. The third domain jiske upar there is a significant rise in trainings, and I'm talking in numbers. There is a massive rise in trainings in the domain of HEC, one side, but employee well-being training on another side. Employee well-being is now the number one training space on which companies are working across the globe, no doubt about it. So when is your next mental health training program? When is your next physical health conversation planned out? When is your next financial well-being program? Few days back, Learning Minds hosted a financial well-being and a mental well-being program, and the kind of response we received, it was phenomenal. In fact, we were talking within our company that, hey, what are we doing? We should have actually launched it earlier. And I think there is a lot of scope for that as well. So that's the third area. The fourth area, and I think this is something where we need to quickly develop modules around, is training customer facing employees in how to conduct themselves, and how to deal with people in which organization timelines have switched. So for example, I give you an example. If I have to if I'm using Storm Fiber, I'm definitely using Storm Fiber as an internet service provider. If there is a complaint, they would have had complaint resolution time, say, to be 12 hours. But today it won't be 12 hours. It might be 24 hours or even more than that. The idea of training the customer service representatives on how to deal with these queries. This again has seen a significant shift in banking. As of now, it has seen a significant shift in banking, but this would definitely flow out to other organizations as well. So that's third. Now let's come to the fourth area. So अब तक मैंने तीन चीजों के बात की है. I have distinguished between critical industries and non-critical industries. Critical industries will only talk about essentials. However, non-critical industries will definitely look into career building domain where they are looking at future job roles. The third domain, which I think is important, जिसके ऊपर अभी हमने बात की, वो चार areas जिसके ऊपर trainings enhance होंगी: policy related and compliance related, tech based, HEC well-being related, and finally customer facing employees training. I think these are four areas. After that, you have domain under soft skills and management skills, which can never be underestimated. What are the areas in that domain? First, and I would like you to take notes around it, and the person who's managing it from the Learning Mind side, my team member, may I request you, the areas that I say, if we can just write it down and share it in the comment segment as well. So the areas where I see a lot of work happening now, one is delegation. A lot of work is being done under delegation and educating and developing managers on delegation skills. Second is change management. And now we are not talking about those fancy change management drives. It's about giving that comfort to people around change, who they are all going through. Third domain, which has seen a significant shift, is the stress management, emotional intelligence domain. And I see a lot of people here in Pakistan doing a lot of good work around it. God bless you all. The fourth domain is leading virtual teams. And to be honest with all of you, those who are listening, this has been my number one training that I've offered in last 3 weeks. So there has been a significant rise in training managers. एक तो उनसे on ground manage करना इतना मुश्किल था, virtual कैसे manage करेंगे? And as a result, what's happening, I'm sure you all are seeing the consequence. You must be seeing the consequence of people complaining कि यार पहले तो 9 to 5 होता था, अब तो 24 घंटे की job हो गई, कभी भी message आ जाता है. So work from home ethics has to be evolved, and I think उसके ऊपर leaders का काम बहुत important है. इसके leading virtual teams will become a significantly important domain.
हमने पहला पब्लिक प्रोग्राम आज शुरू किया है क्रिएटिव वर्चुअल ट्रेनर प्रोग्राम का, बट दिस आई थिंक इज इंपॉर्टेंट. सो पीपल लाइक Ramiz and Najam and Ali and Asim working in all these wonderful companies, one of your major concerns should be that internally जो आपके subject matter experts हैं, ये अगर trainings कराते हैं, how well they are equipped to handle digital platforms. उनको Zoom यूज करना आता है नहीं आता है, अगर वो Teams यूज कर रहे हैं कैसे यूज कर रहे हैं, do you have a moderator to support them? I think these will be the questions for very important deliberation. And last area जिसके ऊपर there is a significant rise in management soft skills, journal technical skills area is the communication skills, और उसमें भी a significant rise in writing skills, a significant rise in writing. Why? Because now the major point of contact, the major point of conversation between employee and customer, between employee and management, between management and employee, one significant tool of communication, and that is writing. Apart from all the Zoom meetings, and of course, but writing is finding a significant attention. So these are the areas that I said that in management, soft skills area and communication domain. I repeat, delegation, change management, stress and emotional intelligence, leading virtual teams, developing trainers, that is developing trainers to deal with this virtual platform, and finally, communication skills with a particular emphasis on writing skills. Okay. The last area, and then we'll have a concluding remarks and then questions. फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में कौन से दो एरियाज हैं जिसको मैं सिग्निफिकेंटली देखता हूं उसके अंदर राइज. वन इज ट्रस्ट बिल्डिंग. देखें, पहली बात तो ये कि ये जितने यहां लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो. कोरोना वायरस की वजह से कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, चंद फायदे जरूर हुए हैं. अब बलून्स सिर्फ पार्टी में यूज हो रहे हैं, और वो भी घर के अंदर ही यूज हो रहे हैं. बलून्स ट्रेनिंग में यूज नहीं हो रहे. कोई स्ट्रॉ से टावर नहीं बनाए जा रहे, और वो बच्चों के लेगो जिन्होंने छीन लिए थे अपनी ट्रेनिंग के लिए, वो लेगो भी आहिस्ता एक एक करके वापस हो रहे हैं. सो देयर इज अ ग्रेट थिंग्स हैपनिंग एज वेल. बट यहाँ जब मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ ना, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वापस ऑफ साइट ट्रेनिंग में ले जाकर हमने कोई टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग करा दी. नो नो नो, नाउ दीज गिमिक्स मे नॉट वर्क. The idea is to have very focused intervention around how we're going to regain the trust. बहुत सारी companies है who have already taken very tough decisions of letting people go. Do you really think when everything gets normalized and new normalized, the trust level would be the same? I honestly don't think so. And there is going to be a significant work required in the domain of trust. But here's another area where I would suggest that only, and I was listening to Gary Hamel, one of the world's most prolific and profound thinkers on management innovation. Gary Hamel says that the number one training domain, development domain post COVID-19 will be innovation, because hamari companies are trained on efficiency. They are not trained on innovation. And innovation will become one of the most talked about subject in organizations today. Why? Because we are efficiency experts. See, we are struggling with supply chain. Why? Because supply chain efficiency got struck. We are not struggling because supply chain was extremely innovative, looking at local context. So yes, this is going to be very, very difficult. So trust and innovation are the domains in which you should start. In very quantifiable, in a very intelligent way with people you trust. I'm not saying isse baat karo, usse baat karo. That's your choice. But domain under trust and domain under innovation, I think this is going to be very, very important. Okay, good. Now there are few important questions जो मुझे पहले से receive हो गए थे, मैं उस पर भी बात करूंगा, and then I'll be open to questions. So you prepare your questions if you have any, but there are few which I received. सबसे पहले बास मुझे कंपनी ने पूछा कि यार सोहेल, हमने समझ नहीं आ रहा हम शुरू कहां से करें. एक चीज होती है राइटर्स ब्लॉक. आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा राइटर्स ब्लॉक के बारे में. राइटर्स ब्लॉक कहते हैं जैसे एक राइटर है तो वो बस वो शुरू कहां से करूं ना, मैं बस एक शुरू करने की स्ट्रेंथ नहीं मिलती. राइटर्स ब्लॉक नाम की कोई चीज नहीं होती. ये होता है परफेक्शन कॉन्स्टिपेशन. आइडिया क्या होता है? आइडिया ये होता है कि मैं जो भी करूं वो मैं परफेक्ट करूं. लेट मी टेल यू, I have done online programs with
top universities in the world. I've done trainings with top service providers, और अभी नहीं किए, बुरे हालात में नहीं किए, अच्छे हालात में किए. Even their technology goofs up. So क्या करें, वो करवाना छोड़ दें. हाँ, सेठ गोदिन का मैं देख रहा था ऑनलाइन प्रोग्राम. He had what 800 people listed जो assignments कर रहे हैं, they are getting back with their projects. Do you think it's a joke? But they would have also goofed up a lot of times. So don't wait for something perfect to happen. Just get going. Just get going. I think that's important, significantly important, because ये जितना बड़ा pause बढ़ जाएगा from training departments to their teams in terms of conversation is going to be very harmful. So don't wait for a perfect thing to happen. The other important thing to note is that because we are getting into this habit, we should look at a maximum 90-minute session slots, not above that. Let's keep it very simple and very clear. उमर फारूकी, oh my god friend, you are here, good to see you. और उमर, अभी मैं आपका पॉइंट पढ़ता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए होगा. 90 minutes का जो slot, it's very important that you start with 90. You want 45 minutes, do 45 minutes, but that's important. तीसरा, लोगों का सवाल है कि क्या ई लर्निंग की तरफ शिफ्ट करें. देखें, ई लर्निंग एनिमेशन एब्सोल्युटली जरूरी है, बट इसके लिए एक और ऑल्टरनेट है जिसे देखा जा सकता है फॉर सम टाइम, एंड दैट इज ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशंस. अगर एक यूडेमी के ऊपर एक प्रोग्राम ई लर्निंग का पड़ा हुआ है तो आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी कॉस्ट इंटेंसिव. हाँ, इफ यू हैव सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को, उनको सबको करवाना है, ओनली देन इट मेक्स सेंस, else it's an expensive affair. If you're doing good e-learning quality work production, it's not cheap. It's way expensive than the regular trainings. It only should happen when you have a long-term insight, and that's important. एक और सवाल लोगों ने पूछा है, और वो ये कि when we get back, जब ये चीजें नॉर्मल होंगी, पहले तो पूछा कि नॉर्मल होंगी. ऑफ कोर्स नॉर्मल होंगी यार. What are we thinking? Are we thinking it's the end of the world? No, we should not be. ठीक है, one should be realistic, but this is bloody negative. We'll all come back inshallah. But let me tell you, when you come back, ये ऐसा नहीं होगा कि अब एक छोटे से ट्रेनिंग कमरे के अंदर हमने 30 लोग भर के बैठा दिए होंगे. Even hotels will have to change their design and patterns. ये large conferences और ये तो आप भूल जाएंगे 1.5 साल के लिए minimum. तो क्या होगा? A lot of in-house networking solutions. मिसाल के तौर पे अभी तो लोग घर पे बैठे हैं तो ई लर्निंग और ये सब हो रहा है. जब कंपनीज में वापस आ जाएंगे तो फिर इस तरह से होगा. नहीं, आई थिंक ट्रेनिंग रूम्स विल बी इक्विप्ड विद जूम टेक्नोलॉजीज एंड ई लर्निंग टेक्नोलॉजीज. दिस विल बी इक्विप्ड, एंड अगर आप इसके लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं तो आई थिंक दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वंडरफुल. मैं उमर का पॉइंट अभी सामने रख रहा हूं बिकॉज ही शेयर्ड समथिंग. पीपल नीड टू लर्न टू मूव अवे फ्रॉम बीइंग जॉब स्पेसिफिक एंड टास्क ओरिएंटेड. नीड टू गेट अप देयर एस एंड फाइंड एवेन्यूज ऑफ इनोवेशन एंड अर्निंग वाया मल्टीपल चैनल्स. एब्सोल्युटली उमर, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी ट्रू है, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू in organizational context. The biggest enemy of innovation is efficiency. Let me be clear on this. Our efficient minds are just not letting us to be innovative. और इस वक्त भी उमर, आपके इस पॉइंट के बाद भी I'm just sharing something. इस वक्त भी I'm telling you my friends, companies are waiting. वापस आए, we gonna apply more Six Sigma, we gonna be better efficient. What efficiency did to you in this crisis? Literally and practically nothing. The most efficient training companies I knew are silent. What efficiency did? It's innovation. It's your ability to try new things, fail, redo it, come back strong. That's the idea. And I think innovation is going to be one of the most, as Gary Hamel said, the guru of the gurus. Gary Hamel said that this is going to be a very important domain to play with. Athiya has a question. Don't you think that people will be going to postpone trainings for a while after coming back to normal routine? Athiya, मुझे लगता है कि ट्रेनिंग पोस्टपोन नहीं होंगी. क्रिटिकल ट्रेनिंग्स, रिमेंबर मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में डिफाइन किया था, क्रिटिकल ट्रेनिंग्स अपनी जगह रहेंगी, उसको मैं डिक्लाइन होते हुए नहीं देख रहा हूं. मैं आपको थोड़ी ब्रेगिंग करता हूं, मैंने पिछले 3 हफ्ते के अंदर आई हैव डन मोर देन 20 सेशंस, सो नथिंग हैज गॉन डाउन. द ओनली थिंग इज दैट नाउ कंपनीज आर बीइंग एब्सोल्युटली स्पेसिफिक. करना क्या है, किसके साथ करना is a different question now. करना क्या है? What are the areas are we talking about? We want to engage them. We want to do things. I am very recently lined up now with a hospital, doing program for their doctors and nurses and other paramedic staff.
and I'm very happy to share. I'm not charging for it. It gives me so much of excitement. But we are doing it on the mental health part, and we have engaged another expert with that as well, along with me. So I think post के बाद भी चीजें normalize होंगी, सब postpone नहीं हो जाएगा. It's I think it would be naive to say that postpone नहीं होगा, but model change होंगे. हम classroom जिस तरह से पहले भरते थे, अब ये वापस नहीं भरने लगे. It will take its due share in time. Ariba, wow. How can we ensure the post-learning cycle while focusing e-learning modules? Basic means to ensure employees get the best out of. Ariba, I have been a very strong advocate against e-learning for some time now. I'll try to explain what I'm saying. I'm not against e-learning. I'm against the way e-learning has been deployed in various organizations. How are we doing it? हम ये कर रहे हैं, and I'm not talking specifically, Ariba, to you and your organization. I'm talking in general what has been our approach towards e-learning. हम क्या कर रहे हैं? हमने एक X vendor देखा, उससे एक Y program बनाया, और Z हमने उसको अपने LMS पे अपलोड कर दिया. E-learning never works until people work. मैं एक एग्जांपल देता हूं. जब my father had heart attack, this is long back, आपको कंडोलेंस करने की जरूरत नहीं, he's pretty fine अभी, do pray for his good health, but when he had heart attack and डॉक्टर के पास मुझे फॉलो अप करने जाना था, तो I had a chat with डॉक्टर. मैंने डॉक्टर को कहा, मैं कहा डॉक्टर, I think this heart problem runs in our family. मेरे दादा को भी हुआ था, अब्बा को भी हुआ है, चाचा को भी हुआ है. You know what doctor said? Doctor said, no, my son, it's not that heart problem runs in your family. The problem is nobody runs in your family. That's the problem. So when people are not inclined towards e-learning, अभी हम क्या करें? E-learning बना दें जो उन्होंने हमसे मांगी भी नहीं थी. अच्छा, e-learning उन्होंने हमसे मांगी भी नहीं थी, लेकिन हमने e-learning बना दी है, और अब हम उनके पीछे पड़े, इसको तुम्हें कंप्लीट करना है. And Ariba, let me tell you, I have seen companies, वो मैनेजर्स को थ्रेट कर रही है कि अगर इतने लोग आपने ई लर्निंग पे कंप्लीट नहीं करवाए तो हम ये कर देंगे. आई थिंक दिस इज स्टूपिड. दिस इज अ टाइम वी शुड मेक लर्निंग एन एम्प्लॉय चॉइस. मैं अरीबा आपसे पूछता हूं, उमर यहाँ पे है, अमीन यहाँ पे, आप लोगों से मैं अतिया से सवाल पूछता हूं. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैप्पीली इनरोल्ड फॉर ए ई लर्निंग प्रोग्राम? व्हेन यू हैड टू डू इट. आपको लगा यूडेमी पे प्रोग्राम करना चाहिए. आई एम नॉट शेयरिंग स्क्रीन. अभी मेरे पास सेत गोदिन का आई एम डूइंग ई लर्निंग प्रोग्राम. इट्स लाइव अप रनिंग विद मी. मैंने इसको पॉज किया हुआ है. आई एम एक्साइटेड टू डू दैट. आई एम एक्साइटेड टू डू दैट, बट देयर हैज टू बी माय कन्विक्शन. हम इसको भी अगर उसी पैटर्न पे ले आए ना, इवैल्यूएशन के पैटर्न पे, ई लर्निंग विल डाई बिफोर. ई लर्निंग शुड ओनली बी यूज्ड एज ब्लेंडेड टूल टू बिगिन विद, एंड ग्रेजुअली जब लोगों का उसके ऊपर एक्यूमेंट बनना शुरू हो, let it come in. Wonderful. Umar, Atiya, learning never stops, like Sohail said. Critically will change, areas will change. Absolutely, Umar, thank you for your response. Amin Gilani says training budgets are decreasing and will decrease more. How it will impact L&D activity? Okay, Amin, मैं आपको एक बात बताऊं. अगर ट्रेनिंग बजट्स को मैं स्ट्रेट 30% श्रिंक कर दूं, आज 30% श्रिंक कर दूं ट्रेनिंग बजट्स को, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेनिंग में ₹1 का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी होटल कॉस्ट, हमारी कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली. नाउ दिस इज अ न्यू पॉसिबिलिटी. अभी देखें, हम लोग अब जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ. टेक्नोलॉजी बहुत अरसे से थी, लेकिन हमने तो लिफ्ट ही नहीं कराई थी इसको. अब हम जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ. सो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू इवन रीडू कॉस्ट. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. I mean, you may say that lunch cost is 4,000 rupee per person if the person is eating at Serena. यहां हम ये कह रहे हैं कि there is some home delivery happening from some mother's kitchen. Now you don't have to worry about 4,000. If that becomes a 400, that's okay, provided the food is of equally good quality. That's the idea. So yes, there will be a lot of admin cost cut as well, which we can always balance it off with that decrease in. But thoda time decrease aayega, there is no doubt about it. Umar, mostly organization cut down their expenses by saving on their training budget. Atiya, you are right, but let me tell you, I am proud to work with organizations जो इस तरह की situation में training cost budgets अपने बढ़ाते हैं.
because they understand the significance. And I think इसमें हम सबको as a training fraternity, आप लोगों को और हमें as a trainer, ये responsibility लेनी पड़ेगी on how to communicate the value of training. I'll give you an example. Last week I did a program sales team के साथ with a insurance company. This week I'm talking to the CEO in terms of the areas that we agreed upon, action plan and new products that we identified to pitch now. We'll have a conversation to understand how we can take it further. If business sees values out of training, why the hell anyone would cut the budget? That's the thing. So I see a lot of hope only if we training professionals work hard in terms of showing the value and the impact. And I think this is a time we should have better instructional designing happening at our place. Ramiz has a question. How would you like to share your views on organization taking decision on their annual learning budgets, and also if budgets not got assigned, what will be the division department wise? I think, Ramiz, I may have a very disruptive idea, but for the first time, companies should now invest their time, energy, and resources in empowering their employees with an employee training budget. That is, employee having an X budget. And ये कोई brand new idea नहीं है. पाकिस्तान में यूनिलीवर में काफी पहले ट्राई हुआ था. And I remember listening to Paul Kaiser about it. Telenor में किसी लेवल पे इसके ऊपर काम जरूर हुआ है कि वो department wise they have their budgets. But I think the future is, and I'm being categorically clear about it, the future is where training budget should be spent by people who want to spend on themselves. ये जो है ना, somebody sitting in some headquarter deciding upon के वो उसने कराची में डिफेंस में अपनी ऑफिस में बैठ के डिसाइड ये किया है कि वो भवलपुर में सेल्स की ट्रेनिंग कैसे करेगा. This nuisance must end. And I think ये डायरेक्शन है उसकी तरफ. बहुत ज्यादा एरिया में अब काम हो रहा है इस हवाले से. मैं चंद अपने दोस्तों के साथ चेक कर रहा था. इंटरनेशनली दे आर मूविंग इनटू दिस लीग. सो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए कंप्लीट मॉडल को रीइमेजिन करने की. और मैं रमीज आपको और उसके कॉन्टेक्स्ट में सबको बता रहा हूं, अब कंपनियां वो नहीं बचेंगी जो ये सोच रही हो ना बस किसी तरह इसको गुजारने, वापस हम अपनी उन्हीं हरकतों को स्टार्ट कर देंगे. ना 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 ना. Now the companies who would not reimagine themselves completely, they'll die. I'm not being pessimistic. I'm being absolutely optimistic. I'm saying they'll die. Why? Because they are not compelling to the order. Aaj bhi kya, I was part of a town hall. Let me share with you. I was part of a town hall. So the CEO wanted me to speak in their town hall. I had an amazing town hall as well. A few days back, I had a meeting with KFC. What a wonderful conversation we had with amazing set of people. But this company ka main naam nahi leta. Town hall, they invited me. My session was to come. Now CEO is talking and CEO is telling हमने क्या करना है. Then I had to say something. I said that, but then I had a call with CEO and I asked him, मैं कहा सर आप इससे पहले कितनी दफा कोविड से गुजरे हैं? मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं. मैं कहा फिर आपको कैसे पता चला क्या करना है? किसी को नहीं पता क्या करना है. It's a great opportunity, and I think training should take the lead in initiating a dialogue with employees in what we need to do, because everyone will have guesses. And it's good to involve people, good to democratize thinking in an organization. ये जो हमने एक दो rooms के लिए thinking को रखा हुआ है, I think this should end, and this is fortunately ending. This is fortunate. Those of you, आप में से जो लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, those who are in say 40 से ऊपर है, मैं आपको एक चैलेंज करता हूं. आप जाएं घर पे कोविड के बारे में चीजें सर्च करें ऑथेंटिक, और अपने बच्चे को कहें कि वो ऑथेंटिक चीजें सर्च करें. देखते ज्यादा ऑथेंटिक चीजें किसको मिलती? आपके बच्चे को मिलेंगी. आपके बच्चे को. हमें तो हर तरह का नॉनसेंस सुनने मिलता है टीवी पे. आपका बच्चा अच्छा WHO से कुछ रिसर्च करके ले आएगा. It's a time where we should empower thinking. It's a time where we should democratize thinking. And those who are listening, I would suggest you सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट है 6Ds का. 6D of exponential thinking. 6D of exponential thinking. I am doing this program. इसका भी companion book है. Hopefully I'll develop something for my clients as well. Exponential transformations के ऊपर. But this is the future. And exponential can never happen by doing just the same thing over and over again. Okay, oh my God, मैं रमीज के क्वेश्चन में बहुत बिजी हो गया था. Mehreen Umair says one of the most important aspect of companies have realized in this COVID-19 is overstaffing. What's your?
मेरीन ओवर स्टाफिंग नहीं थी, आई थिंक अब मेथड चेंज हो गया। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर पहले एक बिल्डिंग बनती थी तो कोई बजरी को मैनेज करता, कोई सीमेंट को मिक्स करता, कोई उसे ऊपर ले जाने का नीचे ले आने का काम करता होता था। फिर एक मशीन आ गई, तो मशीन के आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि कंपनीज ओवर स्टाफ थी, वो टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से जॉब्स इररेलेवेंट हो गई। हम लोग यहाँ पे भूल गए हैं 9/11 जब हुआ और उसके बाद फिर प्रोसेस चलता रहा, डिप रही इकोनॉमी में अमेरिका की, उसके बाद जब ग्रेट रिसेशन आया 2008 का, उसके बाद ये डिक्शन आई थी परमानेंट एम्प्लॉयज नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज। ये कोई बचपन से थोड़ी चली आ रही है, परमानेंट एम्प्लॉयज नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज, बिकॉज कंपनीज रियलाइज कि अगर वी हैव टू let go without any financial complications, what the method would be, and have we adopted to it. So the idea over here that I'm saying is they were not overstaffed. I think now the modus operandi will change. मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ था, मैं ट्रेनिंग मेरी लास्ट जब दिन खुले हुए थे उस वक्त एक ट्रेनिंग थी मेरी बैंक के साथ, और वो बात कर रहे थे कि हमें कहा गया है कि क्रिटिकल एम्प्लॉइज की लिस्ट दो, तो मैं कहा दूसरे नॉन क्रिटिकल होंगे। So ये challenges तो आएंगे and we have to go with it. But I would not necessarily say they would overstaff. Atya, you're asking too many questions. That's good, by the way. It's hard to stay motivated when you get yourself enrolled in an e-course. Your personal conviction matters, absolutely. Marian, I know of companies that invested heavily in theory, future leader program, and now laying off people. Yes, this is the thing, Marian. They came trust. मैंने इसीलिए कहा था ट्रस्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डोमेन्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू स्ट्रगल पोस्ट कोविड। ट्रस्ट एंड इनोवेशन, ये दो एरियाज हैं। जवाद, हाउ विल यू कंपेयर इंटरैक्टिव ट्रेनिंग सेशंस विद ई लर्निंग सेशंस? अगर तो जवाद आप ई लर्निंग सेशंस कह रहे हैं, इनका कोई मैच ही नहीं है। ई लर्निंग इज as a standalone tool, मैं बार बार रिपीट कर, as a standalone tool it's very boring until it is designed by some mega guru of some creation. वर्चुअल ट्रेनिंग्स आर प्रीटी पावरफुल। अभी जो हम कर रहे हैं वर्चुअल ट्रेनिंग है, आज सुबह हम लोगों ने पब्लिक प्रोग्राम रन किया है वर्चुअल ट्रेनिंग के जरिए। आई थिंक द इन्वॉल्वमेंट, द एंगेजमेंट, एवरीथिंग वाज गुड, बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ द ट्रेनर एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर इन द प्रोग्राम। बट इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंटरैक्टिव ट्रेनिंग हैज इट्स ओन डोमेन एंड पावर। E-learning as a standalone is not a solution. What you suggest new for nearly jobless people? सलीम, although इसका ताल्लुक इस कॉन्वर्जेशन से नहीं है, लेकिन चूंकि मसला गहरा है मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ, और ये जवाब मेरे बिहाफ पे मैं आप जितने लोगों को दे सकते हैं जरूर दें। देखिए, मैं आज सुबह मेरी एक कॉन्वर्जेशन हो रही थी एक गेस्ट के साथ, अगले चंद दिनों में इन कॉन्वर्जेशन की सीरीज में वो आ जाएगा मेरे पेज के ऊपर, आप देख सकते हैं। एक शख्स है, उसने इन्वेस्ट करा था जिम बनाने में, कोई काफी पैसा लगा दिया जिम बनाने के अंदर, और मार्च के एंड में उसकी ओपनिंग थी। आपको पता है अब तक ओपनिंग नहीं हुई है उसकी, एंड ही इज डिप्रेस्ड नाउ, व्हाट टू बी डन? एंड आई गिव एन एडवाइस। मैंने कहा सवाल ये है कि क्या वो पैसा कमाने के लिए खोला था या उसका पैशन था, हेल्थ या फिटनेस? अगर उसका पैशन था और उसका उसका जॉय है इसमें, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी उसके लिए। ऑनलाइन हेल्थ फिटनेस क्लासेस स्टार्ट करवाए एंड एंगेज विद पीपल। सो हियर इज अ टाइम, हियर इज अ थॉट, दिस इज अ टाइम टू वॉलंटियर व्हाट यू नो। हैव आई एवर डन मोर ऑफ सच सेशंस? नो, आई हैवंट डन। मुझे जरूरत ही नहीं थी, क्यों करूं मैं? बट नाउ आई एम डूइंग इट बाय एब्सोल्यूट कन्विक्शन दैट दिस कैन हेल्प। अगर मुझे अल्लाह ने एक स्किल दी है, व्हाई नॉट? आई एम यूजिंग इट and I'm doing it at all aspects. Salim, आप, मुझे नहीं पता what you come background you come up with. So for example, मानो सलीम तो है कोई, इब्राहिम साहब है, उनके पास जॉब नहीं है। इब्राहिम क्या करेगा इस वक्त? मैंने, अच्छा चले एक काम करते हैं, थोड़ी सी मैं फ्यूचर मार्केटिंग कर लेता हूँ। कल मेरी फेसबुक पर एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं एक किसान का वाकया शेयर करूंगा। अभी से बता रहा हूं, कल आप देखिएगा, ठीक है सलीम? Yeah, we need to work on communicating value of training, right? Oh, Atika is here. Atika, we don't see possibility to organize classroom session in coming few months, and most of the employees are not comfortable with virtual training as engagement is the main concern. How can we go about it? सबसे पहले तो Atika, you need to hire good trainers for virtual training. But just kidding. Let's come back to, देखें अगले चंद महीने you are being very kind. मैं दिसंबर तक तो कम से कम नहीं देखता कि हम इसी तरह से रूम्स भर भर के ट्रेनिंग करा सकेंगे। आई डोंट सी इट। एंड इफ कंपनीज आर डूइंग इट, आई थिंक बिकॉज ग्लोबली दे आर प्रिडिक्टिंग अनदर वेव ऑफ कोविड, व्हिच इज अनदर स्कैरी थॉट।
but by that time I think the economies and everything would be immune and we would have some solutions around it. So hopefully I'm looking at it positively, but I think this is a shift. This is a shift, a global shift to which we need to understand. So now the idea should not be when will the classroom start. The idea and the creativity and the agility should be how we can make virtual more engaging. And for that, I think we need to retrain our trainers. That's how we need to retrain our capability. यहाँ पे चूंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मैं आपको एक प्रोफेशन बता रहा हूँ जिसकी बहुत डिमांड बढ़ने लगी है. Atika, for sure, I know she knows about this solution. The solution is of instructional designers. ऑर्गेनाइजेशन में इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स की जॉब्स में एक मैसिव इंक्रीमेंट आया है ग्लोबली. इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स, और पाकिस्तान में नहीं है इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स. आई एम टेलिंग यू, देयर आर वेरी फ्यू, आई कैन एक्चुअली काउंट ऑन माय फिंगर्स जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स हैं. सो कंपनीज में दो रोल बहुत क्रिटिकल हो जाएंगे, एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर का, दूसरा जो कंपनियों में जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, जिनका बेचारों का काम सिर्फ अटेंडेंस शीट मेंटेन करना है और फिर 9:30 बजे भी साइन करवानी है और 4:35 पे भी साइन करानी है. ओ माय गुडनेस, व्हाट क्रिएटिविटी. अब ये ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स जो है ना, दे शुड नाउ बिकम डिजिटल मॉडरेटर्स. एंड ये एक स्किल है जिसको सीखना चाहिए. मैंने अपनी क्लाइंट्स के साथ अभी टीम्स पे सेशन किए हैं जहां उनकी टीम में से कोई डिजिटली सेशंस को मॉडरेट कर रहा है. दे सेंड मी रिलेटिव क्वेश्चंस एंड आई रिस्पॉन्ड. वी सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई थिंक दिस कैन बी वेरी वेरी productive per se. He make budgets division wise. Good, make division wise, but I'm saying the future is individual. Roshana Khan, do you think e-learning programs add as much value as regular session? मैं इसके ऊपर बहुत दफा बात कर चुका. वैसे तो what is being done by trainers to ensure the same level of it? देखिए, e-learning को और virtual training को अलग करें. E-learning is a platform based stuff जिसके अंदर देयर आर लेसर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइव इंटरेक्शन. अभी जो हम कर रहे हैं ये एक वर्चुअल ट्रेनिंग है एक तरीके की, ठीक है, हम इसको ट्रेनिंग का नाम नहीं दे रहे, बट ये वर्चुअल है जिसमें लाइव है, क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, इंटरेक्शन हो सकता है. हैविंग सेड दैट, ई लर्निंग के अंदर देयर इज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर की बात बोली, उसको अगर इस्तेमाल किया जाए, क्वेश्चन आंसर्स किस तरह हो रहे हैं, टेस्टिंग किस तरह हो रही है, कितना इंगेजिंग कंटेंट है, क्या वो स्क्रिप्ट बुक तो नहीं है जिसके ऊपर काम हो रहा है. अभी हम लोग एक क्लाइंट के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. वी आर डेवलपिंग 2 मॉड्यूल्स फॉर देम व्हिच विल बी ई लर्निंग. उनके एलएमएस पे जाएगा. वन वी आर डेवलपिंग फॉर लीडरशिप and that's leading at all levels, and one we are developing on positive mind and how you can engage yourself. अब ये एक ऐसा solution है जिसके साथ we are having a lot of PDF material and testing and da, so that goes on. Having said that, of course it can never be engaging as such as this, because abhi aapko sawal aa raha hai, I'm here to answer. So this has to be, taken into account. Ramesh says thank you, you're kind. Thank you, Ramesh. Sohail Iftikhar, post COVID, what 1 or 2 key challenges do you foresee in employee learning as a client partner? How do you see the overall training industry evolving for supporting changes in business strategy? Sohail, hello first of all. I tell you Sohail, मैं इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त ट्रेनिंग इंडस्ट्री को काफी लैग करता हुआ देख रहा हूँ. प्लीज डोंट माइंड. अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को डेवलप होने का मौका ही नहीं मिला था. मैं अभी ट्रेनिंग फंक्शन के लोगों की बात कर रहा हूँ. ट्रेनर्स भी कौन से डेवलप हुए हैं, लेकिन चले ट्रेनिंग फंक्शन को डेवलप होने का मौका नहीं मिला था. उसकी वजह ये थी कि वो अब तक ऑर्डर टेकिंग ही पूरी नहीं हो रही थी हमारी. आई थिंक दिस इज अ टाइम वेयर वी पुट आवर स्टेप डाउन एंड फुट डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस नीड्स. एंड मैंने क्या कहा, व्हाट बिजनेस नीड्स, ये अब ये जो एम्बिशियस लीडरशिप थॉट्स थी ना, इससे नहीं आएंगी. दिस कम्स आउट ऑफ विजन. व्हाट वी, मैंने एक कराची में लीडरशिप कॉन्फ्रेंस थी, काफी सीनियर लोग बैठे थे, एंड आई बीइंग माई सेल्फ, मैंने वहां पे बोला, आई सी अ लॉट ऑफ एम्बिशियस लीडर्स इन दिस कंट्री, हार्डली आई फाइंड फ्यू विजनरीज. Visionaries are people who think about 2040 in the time of 2020. Of course, उनको भी कोविड से झटका लगेगा, but they are prepared in terms of where they are heading. Unfortunately, हमारे यहाँ तो है ना, कल को कैसे बेहतर करना है, कल थोड़ा इससे ज्यादा कमा लूं. This mindset should go in training. So post-COVID, what are the few major challenges as in employee learning? I think one of the things is that learning should now become an individual affair, and it will become an individual affair. You cannot control people to come to programs just like we have been controlling in classrooms. और अगर अभी भी हमारा यही रवैया रहा, people will come out. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. Let me give you an example. और ये एक ऐसी एग्जांपल है, इस वक्त जितने लोग बैठे ना सब रिलेट कर सकेंगे उसके साथ. तो मैं एक कंपनी में काम करता था,
और काम तो कर नहीं रहा था उनके साथ, एज एन कंसल्टिंग प्रोजेक्ट पे मैं था। तो भाई वो पता ये चला कि वहां पर आई वाज जस्ट टॉकिंग विद एचआर, तो वो उस वक्त क्लोजिंग चल रही थी, तो मेडिकल रिसिप्ट्स आई हुई थी, सबके बिल आए हुए थे और दवाइयों के खर्चे आए हुए थे। तो मैं कह काफी बीमार होते हैं आपके यहाँ लोग। उसने कहा बीमार थोड़ी होते हैं यार सोहेल, ये मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है, एंड में सब अपनी नकली पर्चियां बनाते हैं और ये फिर भेज देते हैं, और बस हमें फिर इनको रीइंबर्स करना होता है। आपको ट्रेजेडी की डेफिनेशन इससे ज्यादा बेहतर कोई पता है? Company is paying the same amount that they would have paid by a direct inclusion in the salary, but नहीं, चूंकि मैंने एक बंदा हायर किया है जिसका काम सिर्फ ये है कि वो मेडिकल रिकॉर्ड देख देख कर पैसे रिलीज करे, I think this level of creativity must die, else we will die. I think we should move ahead with it. So I think employee becoming the decider of their domain is the future. Oh wow, Meena is here. Meena says COVID has changed the training arena totally. Innovation is the only solution. People will need to reskill, which means training, be it online, face to face, or so. Absolutely, without any doubt. And as I said, अभी तो इनोवेशन के फेसेट्स खुलना बाकी हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अभी तो वर्चुअल रियलिटी बेस्ड ट्रेनिंग्स नहीं आई हैं, अभी वर्चुअल रियलिटी का गेम स्टार्ट होगा, बिकॉज पीपल वुड नीड अ सर्टेन एम्बियंस. सो आप वो 3D ग्लासेस और वो पहनकर, वर्चुअल ग्लासेस पहनकर अभी आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, ये कोई खास दूर की बात नहीं है. देखिए मैं आपको यहाँ पे जितने भी अभी आई कैन सी 54 पीपल लाइव, पता है लोग प्रिडिक्शंस क्यों नहीं करते आगे की? उनको डर लगता है कि नहीं हुई तो हमारी इज्जत खराब ना हो जाए, कोई वल्नरेबल ना हो जाए. आई एम नेवर स्केर्ड ऑफ प्रिडिक्टिंग, बिकॉज प्रिडिक्शन आप अपनी बेहतरीन नॉलेज और रियलिटी टेस्टिंग के साथ ही करते हैं. ठीक है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुझे अब तक की जो नंबर्स है ना, मैं गलत होता हुआ दिख नहीं रहा. सबको ऐसा लगता है मैं गलत होता हुआ नहीं हूं, लेकिन virtual reality is to come, augmented reality is to come. This would be embraced in our training programs. Don't worry, this is going to happen very, very, very soon. This is going to happen very soon. Asim Sheikh, we can't survival without artificial intelligence is coming in days. Yes, AI is another domain. और ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ, virtual reality based training, augmented, this is going to be the future. We can engage employees by asking them to send how creatively they are spending their time. So yeah, engaging it's important, but I think core business areas we need to come up with more idea. Do suggest some great organizations from where we can learn about instructional design. मेरी knowledge के हिसाब से the best in the world is ATD, that is Association of Talent Development US. इनकी qualification CPLP अगर आप करते हैं, you becomes amongst very few chosen learning professionals in the world. Go and check out their website. It's perhaps td.org, td.org. So that's about that. Atya says, how can we make virtual session more interactive? By attending my program, Creative Virtual Trainer Program, that's happening from May 4th to 6th. That is a shameless marketing by me. But you can attend, not my, kisi aur ka attend karo, but I think this is skill one needs to learn. There's no harm in it. Okay. Okay. How about the classroom training? Are we going to totally on web-based training after going? No, no, no. ऐसा नहीं है. We will inshallah move to classroom trainings, but classroom trainings की intensity, की frequency, and की head counts would change. It may change. I see a major decline in full day trainings now. A major decline in it. And you will see and observe that. So अब तक के यही questions थे. I think the time was well spent. Thank you everyone for switching in, coming in. I think you people are very kind, but the idea is go share it with other people. That's the idea. And I want also thought कि मैं आप लोगों से एक मशवरा मांगूं. आप please अपना feedback. Let me type my email ID. It's szindani@sohailzindani.com. आप लोग प्लीज अपना रिस्पॉन्स, अपना फीडबैक शेयर करें. टाइमिंग के हवाले से भी कि अगर आपको लगता है 3 से 4 का टाइम वाज गुड या हमें इसको बाद में करना चाहिए, बिकॉज नॉर्मली मेरे लाइव सेशंस के ऊपर वी हैव एटलीस्ट 200-300 पीपल. एज ऑफ नाउ वी हैव 52. लोग मुझे बता रहे हैं 52 भी बहुत है, वो नहीं आते इतने. ठीक है, बट one should aim excellence. One should see कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कैसे engage कर सकते हैं. So please give your feedback on that. So yeah, that's it from my side. Share knowledge, do best of what you can do. And एक मैं मैसेज सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, and that is, देखें
डोंट ट्राई टू डू गुड। ये सारे लगे हुए ना, हम कुछ नेकी का काम करें, हम कुछ नेकी। डू व्हाट अल्लाह हैज ब्लेस्ड यू विथ। जो भी आपको अल्लाह ने दिया है। मीना को अल्लाह ने एक एक स्किल दी है कि वो लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकती है। सी आज किसकी की जा सकती है। इफ आतिका इज डूइंग समथिंग फॉर से ई लर्निंग, तो वो किसी और कंपनी के लोगों को एजुकेट कर सकती है। दिस इज द वे वी कैन ऑल मूव फॉरवर्ड in creating amazing possibilities. Inshallah, we will come out of it. And as I always say, things will be normal, but there will be a new normal. So आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया for attending. Share your feedback. That's what we love the most. God bless you. Allah Hafiz.